कैसे हो सभी? हाउ आर यू? बहुत पीसफुल होता है. इट्स अर्ली मॉर्निंग, वेरी पीसफुल. 80% of the world sleeping. No trouble, no problems. And moreover, at this time, nobody wants to use social media. This is one of the finest time to read, study, prepare. Undoubtedly, no, you know, distractions, no deviations, direct focus on exam preparations. ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है पढ़ने का. सो आज बहुत कम लोग हैं यहाँ पे क्या? अच्छा आ गए, बहुत सारे लोग हैं. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. आई वॉन्ट टू रीड द नेम्स. देन आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू. I'll tell you one of my favorite book, about my favorite book, and one of my methods. Good morning, Acharya, Sushmita, Vishwajit, Vatsala. जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है. खुश कीर्ति, हाउ यू? निकिता, सृष्टि, बहुत बढ़िया. दम है सब में, दम. कोमल कैसे हो? आई एम गुड कोमल, बस वो थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन है. डॉक्टर से कि 3-4 दिन बोलना नहीं है. 3-4 दिन नहीं बोलूंगा तो काम कैसे चलेगा? पापी पेट का सवाल है. लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. हेलो सुनील, कैसे हो आप? चलो आज की खास बात बताता हूँ. आज के 3 AM सेशन की सबसे खास बात. आज आई विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर बुक. मेरी फेवरेट बुक है. दिस इज द साइज. My favorite book, one of my favorite book. I will be telling you some writers जो कुछ मैंने निशान लगा रखे होते हैं अपने लिए. हमेशा मैं अपने लिए निशान लगा रखता हूँ कि मुझे क्या क्या पढ़ना है. I'll pick things from here. I'll make you write. Now see, again I think it's okay. Backside, like this. This is the book. Because in front camera I see the side from the reflective side. This book, when I was prepared very much, I used to, like, always, I was almost prepared. I already had qualified my first night. I had to go for JRF. I would take this book in my hand and open any page. Then I would see if I remember things or not. I tried to revise this book also, though I couldn't complete everything, but I revised all the most important things for 7 to 8 times. बहुत खास बुक है ये. थोड़ी महंगी भी आती है. इट्स लाइक मे बी 1800 to 1900 राइट नाउ. बुक्स पे GST लग गया है, सो आपके लिए महंगी हो गई होगी. सो आई विल बी टेलिंग यू सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम हियर. बट बिफोर दैट, राइट डाउन अबाउट अ फेमस राइटर. ये आप फेमस राइटर लिखो, ये आपके बहुत काम आएगा. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सर्वेंटीज. Cervantes Don Quixote. Cerventes. Cervantes Don Quixote. Don Don Quixote. Cervantes Don Quixote deals with a character, Alonso Quijano, who pretends to be a royal man. This story is must read for all of you. You must read who is Alonso Quijano, who is Sancho Panza. This is the writer taken from Spanish literature. ये Spanish literature से है. It's a must-read writer. Cervantes, Don Quixote, Sancho Panza. These are very important things. Alonso Quijano. When you read these things, go for a reference reading. Charlotte Lennox. The writer is Charlotte, Charlotte.
Lennox, Charlotte Lennox. 90% students who are preparing नेट ordinary way में उनको नहीं आएगा ये, they won't know it, but ये आपको पढ़ना है. Charlotte Lennox famous work, female quixote. Female quixote, yes, Sayantika has written it. So there is a girl, she wants to have a marriage. Her lover is ready, her family members are ready, everybody is ready. But she said, no, I want to have an elopement, a lot of trouble, a lot of struggle, a lot of fight, like the heroine of a romance. So she has all the favorable chances to get married in an easy way. But she said, no, I will fight. I will go for troubles. She forces her lover to come and elope. So जो female Lennox, female quixote है, that concept is very important. ये पढ़ना है आपको दोनों. Now, the most important book that you have to read. See, I have opened something and I have found my text. I have already marked certain books for me. Ford Madox Ford. Ford Madox Ford. A very important writer. His famous novel, The Good Soldier of 1915. Just remember basic details. Ford Madox Ford. His famous work, The Good Soldier. Just remember the basic details. The next thing is, how many of you know Ivan Goncharov? Ivan Goncharov. 90% students have not even heard about it. Online students, remember Russian literature lecture? The famous writer Ivan Goncharov, G-O-N, Goncha, C-H-A-R-O-V. See, Russian novelist and a travel writer. The famous book, The Oblomov Story. Oblomov, O-B-L-O-M-O-V. Remember Russian literature lecture? Superfluous man concept question in net exam. इसमें question आ चुका है net exam में. Ivan Goncharov, famous work Oblomov. Do it immediately. Summary देख लो. The hero is so much lazy that he doesn't come out of his bed. बेड से बाहर नहीं आता है. शुरू की first 50 pages में वो चेयर और बेड पे रहता है. Is eating in the bed, watching football matches, doesn't come out. The super lazy hero, superfluous man, Ivan Goncharov, Oblomov. The next famous writer is, who has written the poetry Howl, H-O-W-L, Howl, from Beat Generation. Howl किसने लिखा है? Beat Generation, come on. Tell me. बहुत बढ़िया. This is the writer, Allen Ginsberg. His other work is Kaddish. Write this thing, Kaddish, K-A-D-D-I-S-H. 90% people won't know about this thing. Howl and Kaddish, H-O-W-L, Howl, and K-A-D-D-I-S-H. No need to read, but these writers are from Beat Generation. So I'm 100% sure you remember the lecture. You know Jack Kerouac. You remember William S. Burroughs. You remember Jack Kerouac's On the Road is very important work. That's very, very important thing. The next one, French writer, André Gide. The famous work that you have to remember is, André Gide is also a Nobel awardee. His famous work is The Immoralist. It's a French writer, Nobel awardee, André Gide, G-I-D. Only title, this much only. No need to read anything else. Next one, Margaret Fuller. ये कुछ राइटर्स आपको रैंडम मिलेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको देख लेते हैं. American feminist Margaret Fuller, very important. Member of Transcendental Club.
क्वेश्चन था इस सेट एग्जाम में. Name the female member of Transcendental Club. So who are the other two members? Who are the most important members? Margaret Fuller is female. Who are two other members of Transcendental Club? Transcendentalism. कौन कौन याद है आपको? याद करो ट्रांसडेंटलिज्म कौन कौन याद है? कम ऑन. एमर्सन, R.W. एमर्सन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. एंड H.D. Thoreau, Henry David Thoreau. These are the main prominent writers. Margaret Fuller was the female companion in this group. It's very important thing. American Transcendentalist movement में एक lady भी थी, one lady, Margaret Fuller. Go for her famous works. उनकी famous works हैं. वैसे तो बहुत सारा nature पे है, but she contributed in the magazine Dial. She contributed in the magazine Dial. A lady is not for burning. Remember I have taught. Tell me, किसने लिखा है? A lady is not for burning. A lady is not for burning. Story of a soldier, he wants to die. He is fed up with life. Story of a girl who has been accused of witchcraft. Both locked together. They fall in love. There is a man who has been missing. People think girl has converted that man into a dog. Christopher Fry, very good, बहुत बढ़िया, proud of you guys. Christopher Fry, बहुत बढ़िया. इसको याद कर लेना अगर नहीं पढ़ा है तो. Do you know? You must have read Middlemarch. Middlemarch पढ़ा है George Eliot. If you are following me, obviously. You must have read. Dorothea Brooke, in famous book Middlemarch, the heroine Dorothea Brooke, she marries the professor. What is the name of the professor? Because I have more questions. So tell me the name of professor. Come on. देखते हैं कौन depth में पढ़ता है. How many of you prepare in depth? What is the name of the professor in Dorothea Middlemarch? मैंने आपका सजेशन पढ़ा है डियर सर, यू आर राइट. मेरे पास माइक के ऑप्शंस हैं, लेकिन आप मेरी टीम नहीं है ना सुबह सुबह चीज़ें हैंडल कर पाए. तो देखता हूँ कल मैं आई अरेंज समथिंग. एडवर्ड कैसुबन, इट्स नॉट. कोमल ने आंसर लिखा है, कोमल का चेक कर लेना. कोमल्स आंसर इज परफेक्ट आंसर, एडवर्ड कैसुबन. So my students have answered this. That's the good thing. But we are made for tough things. Question is that Edward Casaubon was working on a book at that time. One of the toughest book, greatest book of all time. He was trying to write a book. What was the name of the book? A book in the book. Manju Sharma, perfect answer. बहुत बढ़िया. तन्मय, शाबाश. He was working on a book called Key of All Mythologies. Here comes my question. There is a writer who has actually written this book under the title The Golden Bow. What is the name of the title? If you remember that lecture special वाला तो आपको याद होगा. बहुत बढ़िया, शाबाश. J.G. Fraser, बहुत बढ़िया. The name of the book is The Golden Bow. Scottish anthropologist and classic scholar. J.G. Fraser is from Scotland, the one who has written The Golden Bow, the real key of all mythologies, inspired from Edward Casaubon. कोमल कह रही है मैंने कल ही रिवाइज किया था. वेरी गुड कोमल. इससे अच्छी चीज़ ये है ना दैट यू विल गेट टू नो कि और क्या क्या चीज़ें रिवाइज करनी है. और मुझे भी यहाँ पे ये नहीं रहेगा कि मैं भी वन साइडेड पूछूं. जो मेरे सामने आ रहे हैं और जिस पर टिक लगा हुआ है वो पूछ रहा हूँ.
Indian Summer of a Foresight, Man of Property, and Foresight Saga. Three books written by famous writer. His first book is 1906, A Man of Property, then Indian Summer of a Foresight, and Foresight Saga, modern novel series. बहुत बढ़िया. जॉन गाल्सवर्दी. नो नीड टू रीड एनीथिंग बट रिमेंबर द टाइटल्स. टाइटल्स याद रखना दोस्तों. कौन सी बुक में देर इज अ थीम? इन विच बुक देर इज अ थीम? ओनली कनेक्ट. द गर्ल ट्राइज टू कनेक्ट टू फैमिलीज. ओनली कनेक्ट किस बुक में है? इन विच बुक वी हैव द थीम ओनली कनेक्ट. शाबाश. हॉवर्ड्स एंड. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ये जो यहाँ आंसर दे रहे हो ना, अपने नाम चेक कर लो, तुम्हारे नाम जेआरएफ में होंगे. हाँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्वालिफाई करके याद नहीं करते. ह्यूमन नेचर है. क्वालिफाई करने के बाद कई बार मैं फेसबुक पोस्ट देखता हूँ, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू अलमाइटी, आई प्लेड वेल, बॉयज प्लेड वेल. मुझे लगता है कहीं तो ये तो बच्चा बड़ा बड़ा आंसर करता था, इसने मेरा नाम लिखा होगा. कहीं नहीं लिखा होता. शुरू में बुरा लगता था, फिर अब समझ में आ गया ह्यूमन नेचर है. हाँ, लेकिन अपना नाम जरूर चेक कर लेना, क्योंकि तुम लोग इतनी अर्ली मॉर्निंग मेहनत कर रहे हो. यू नो वॉट, वंस यू क्वालिफाई ना, for the rest of the life you will not find a teacher teaching you at 3 a.m. तो ये moment जी लो. This moment is very important. Now the famous story of a lady who comes from a happening background gets married to a clumsy man, finds her life dull, looks for happening life, goes for affairs, and finally commits suicide by drinking arsenic. नेम द फेमस बुक फ्रॉम फ्रेंच लिटरेचर. फ्रेंच लिटरेचर से कौन सी ये फेमस बुक है बताओ? मैडम बोवारी. बहुत बढ़िया. यू नो व्हाट, इस तरह से कोई नहीं रोक पाएगा आपको एग्जाम में. यू विल क्वालिफाई. नेम द फेमस राइटर हु हैज रिटन द जेम्स बॉन्ड सीरीज. जेम्स बॉन्ड सीरीज स्पाई फिक्शन कौन लिखता था? Name the writer. James Bond series. पेपर 1 की भी क्लासेस होंगी. यस. इयान फ्लेमिंग. इयान फ्लेमिंग. बहुत बढ़िया. जेम्स बॉन्ड सीरीज, इयान फ्लेमिंग. द फेमस वर्क बाय इयान फ्लेमिंग आर फ्रॉम रशिया विद लव. मूवी बनी है जेम्स बॉन्ड की, फ्रॉम रशिया विद लव. दूसरी बुक है डायमंड्स आर फॉरएवर. तीसरी बुक है लिव एंड लेट डाई. लिव एंड लेट डाई. फोर्थ है ऑन हर मैजेस्टी सीक्रेट सर्विस. इनमें से कईयों पे जेम्स बॉन्ड की बुक है. हु, ये तो आपको आता होगा, आई एम श्योर. लेट्स सी हु आंसर्स दिस थिंग. The famous work which has 41 plus languages mixed together. 41 से ज़्यादा languages mixed है, plus complex structure, toughest to read and understand. What is the name of the book written by James Joyce, which itself is a mixture of multiple languages, 41 languages? What is the name of the book by James Joyce? वेस्टलैंड नहीं है. वेस्टलैंड तो इलियट का बुक है. इट्स इलियट. आई एम आस्किंग जेम्स जॉयस, रिटन इन 1939. फिनिगन्स वेक. बहुत बढ़िया. हु हैज रिटन, ये आपको आता होगा शायद, ये इजी है, इसको नहीं पूछते. थोड़ा सा जंप करते हैं, बड़े बड़े पेज छोड़ते हैं. अब चलते हैं आगे. Which book inspired Jonathan Swift to write Gulliver's Travels? किस बुक से इंस्पिरेशन मिली थी? It is believed that this particular book inspired Jonathan Swift to write Gulliver's Travels.
Come on. Not Ulysses, it means Jonathan Swift, Gulliver's Travels lecture nahi suna. Remember, it is said that the idea must have come to him from the cave hill in Belfast, which looks like a sleeping giant. But there is also one writer. It is believed that writer must have inspired him. The name of the writer is R.M. Ballantyne. The name of the book is The Coral Island. The Coral Island, R.M. Ballantyne. कोई बात अगर मिस हुआ है तो टेक अ नोट. आपकी तरह आज जितने ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं ना आपके, वो आपकी तरह यहाँ पढ़ रहे होते थे. राजवीर है ना अन अकेडमी से, उसको पढ़ाया मैंने, एंड ही इज फार बेटर देन एनी वन, बिकॉज एटलीस्ट ही रिमेंबर्स. बाकी तो डिनाई करते हैं कि नहीं पढ़ा है. अर्पिता तो थ्रू आउट बोलती है कोचिंग नहीं की, जबकि अर्पिता उसकी फ्रेंड्स सब यहाँ पढ़ते थे. एक तो ऑक्सफोर्ड है, उसकी फ्रेंड दिल्ली आई थी पढ़ने, ऑक्सफोर्ड चली गई है वो भी बहुत डाउन टू अर्थ है. वो ऑक्सफोर्ड से भी मुझे मैसेज करती है. आयरिश मर्डॉक पे पीएचडी कर रही है. देन आई थिंक अपग्रेड पे नीरजा पढ़ा रही है. नीरजा भी मेरी स्टूडेंट है, फ्लुएंट इन इंग्लिश. उसके घर में बहुत सारे IAS हैं. आई अटेंडेड हर बर्थडे एंड आई वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हर ग्रैंडफादर. पता नहीं अभी वो है या नहीं है, बट ही वॉज वेरी एनर्जेटिक मैन. मज़ा आ गया था. द फेमस बुक द कॉमनवेल्थ ऑफ ओशियाना, हु हैज रिटन इट? द कॉमनवेल्थ ऑफ ओशियाना किसने लिखा है? राइट इट. जेम्स हैरिंगटन. जेम्स हैरिंगटन, Commonwealth of Oceania. It's a very important work. It was dedicated to Oliver Cromwell. The Commonwealth of Oceania, written by James Harrington, dedicated to Cromwell. It's very important. ये important work है. The Coming Race. The Coming Race by Edward Bulwer Lytton. Edward Bulwer, BULWER, Lytton, LYTTON. Edward Bulwer Lytton, The Coming Race, 1871. One of the first science fiction book. One of the first science fiction book. Very important. ये याद रखना. The famous work written by Charles Reade, praised by Charles Dickens, The Cloister and the Hearth. It published in 1861. The story is set in 15th century. इसको नोट कर लो. No need to read, जितना बताया था काफ़ी है. The famous writer, तो आपको देखना है. The writer who has written Top Girls, Cloud 9, Serious Money. Tell me the name of the writer. And ये तीनों बुक्स में नेट पे क्वेश्चन है. टॉप गर्ल्स, क्लाउड 9, सीरियस मनी. तीनों पे क्वेश्चन है. नेम द राइटर. एंड ये तीनों बुक मस्ट रीड है. कैरल चर्चिल, मस्ट रीड बुक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल. तीनों पढ़ लेना. तीनों पे नेट में क्वेश्चन है. टॉप गर्ल्स, क्लाउड 9, सीरियस मनी. Name the writer who has written Saturday Night, Sunday Morning. Saturday Night, Sunday Morning किसने लिखा है? Saturday Night, Sunday Morning किसकी बुक है? Waiting. If you don't know, it's all right. Saturday Night, Sunday Morning is also a modern work. Alan Sillito. Joy has answered it. Joy Bose has answered it. Check it. Alan Sillito. The same writer has written one more important work. Very important. The Loneliness of a Long Distance Runner. The Loneliness of a Long Distance Runner. इस पे भी पेपर में क्वेश्चन है. Check it. The Loneliness of a Long Distance Runner.
ये भी आपको पढ़ना है, इस पे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। द द ब्राइड ऑफ लेमरमूर, प्लीज राइट इट। द ब्राइड ऑफ लेमरमूर, LAMMERMOOR, शुभम, द ब्राइड ऑफ लेमरमूर किसने लिखा है? क्वेश्चन ऑफ नेट एग्जाम, हिस्टोरिकल नॉवेल, वॉल्टर स्कॉट। You know, Walter Scott has written historical novels only. He is father of historical novels. So what do you have to remember here? It is actually based on a real story. There was a girl, she was married in a forceful marriage. She kills her husband, runs away from the window, and became a sensation at that time. The Bride of Lammermoor is very much, based on that story. The name of the heroine is Lucy Aston. Lucy Aston. She kills her husband and leaves. The most sensational story. The next one. ये तो आपको आता होगा, पूछते हैं, चलो पूछ के देखते हैं। A kid goes to Europe, especially France, gets settled there, doesn't come back. Family wants him to come back, but he's not willing. Family collects money and sends a neighbor to go and bring him back. But the neighbor also wanted to go there. So when family sends him, the neighbor also goes and stays there. Sayantika has already answered. Sayantika ने क्वेश्चन पूरा होने से पहले ही आंसर कर दिया है. Ambassadors. Very much like that movie, Sing is King, where one hero is sent to Australia to bring another one. But the main aim is to send him away. एक फेमस बुक आपको नोट करना है, नोट इट। द ब्लैक ड्वार्फ, द ब्लैक ड्वार्फ, इसको नोट करना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज बाय वॉल्टर स्कॉट, रिटन 1816। द ब्लैक ड्वार्फ, इट हैज बायरोनिक कैरेक्टर्स। इसमें बायरोनिक कैरेक्टर्स, इनको चेक करो। The next important one we have is Julian Barnes, Booker awardee writer, the famous work The Sense of an Ending. Julian Barnes has written The Sense of an Ending. Frank Kermode has written A Sense of an Ending. ये आपका homework है. Find it out. What is the story of Julian Barnes, Sense of an Ending? What is the story of Frank Kermode, Sense of an Ending? The next one, and both have been asked in exam, दोनों एग्जाम में आए। Art for art's sake movement got promoted in England by, Art for art's sake इंग्लैंड में किसने प्रमोट किया था? Who promoted art for art's sake in England? बहुत बढ़िया, वॉल्टर पीटर। What is the subtitle of Urunuku, written by Ephra Ben? Somebody has written Gautier. No. Listen to the question. Gautam, listen to the question. I'm saying in England. What is the subtitle of Urunuku? The history of the royal slave. Dear sir, you have the notes and you're getting up at 3 a.m. Nobody can stop you. Those who are running in the race to qualify, you have a psychological advance, you have a practical advance. आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ज़्यादा रिवाइज कर रहे हैं, और सबसे बड़ी जीत होती है साइकोलॉजिकल जीत। आपके कंपटीशन में जो भी लोग पढ़ रहे हैं ना,
जब वो ये सेशन दिन में देखेंगे, दिन में जब वो ये सेशन देखेंगे, उनको पता क्या लगेगा कि जब मैं सो रहा था ना तो कुछ पागल ऐसे थे जो पढ़ रहे थे, तो वहीं घबराना शुरू कर देंगे। तो आपके बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स ऐसे ही साइड हो जाएंगे। आपने देखा होगा ना, आर्मी वाले क्या करते हैं, आर्मी वालों को बंदूक लेके चिल्लाना सिखा देते हैं। जब बोलते हैं अटैक तो हु करके चिल्लाते हैं, हो हा करके। ये वॉर क्राई होता है। वॉर क्राई किस लिए होता है? वॉर क्राई आप में जोश भर देता है, सामने वाले को डरा देता है। तो एकदम डर की सिचुएशन में जहां पे यू आर स्केर्ड, देयर ऑल्सो इफ यू टेक अ वॉर क्राई, सामने वाला डर जाएगा। योर 3 AM सेशन इज अ वॉर क्राई। चलो गो फॉर सम मोर राइटर्स, कम ऑन, ये सेशन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। There was a character, he wanted to have all things, he wanted to have a life where he is at number 1 rank. Neither in his school, nor in college, nor in life, he never could secure the top position. So finally, he tried to secure a room at the top. एक लड़का था जिसे जिंदगी में कभी भी नंबर 1 पोजीशन नहीं मिली थी टॉप पे आने की, तो उसने लास्ट में क्या करा, एक बिल्डिंग में जाके रूम ले लिया, वो भी टॉप पे, कि कहीं तो टॉप पे आऊं, कहीं तो लॉटरी लिखी। द रूम एट द टॉप हैज बीन रिटन बाय, वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, पोस्ट मॉडर्न स्टाइल अपार्टमेंट कल्चर स्टोरी, जॉन ब्रेन, रूम एट द टॉप, प्लीज चेक इट इफ यू डोंट नो इट। Then there is a Booker Award book by David Story, Seville. Summary. Go for a summary. Seville. The writer who wrote birthday letters addressed to his sons and said that I did not kill your mother. I am not responsible for your mother's suicide. Ted Hughes, the poet laureate, talking about the death of Sylvia Plath. So check birthday letters. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनके मैसेज IAS की तैयारी कर रही हैं और सुबह 3 बजे उठती है सेशन को देख के। अभी एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट ने भी लिखा था कि सर मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ पर मैं आपका सेशन देखता हूँ। पेपर 1 की भी सेशन करेंगे। जब आपको थंबनेल में पेपर 1 देखे समझ जाओ पेपर 1 है। पहले तो आई डिडंट यूज टू डील विद इट, बट नाउ एज आई हैव रिटन अ बुक फॉर पेपर 1, तो माई स्टूडेंट्स वांट मी टू स्पीक, आई शुड स्पीक, माई पब्लिशर ऑल्सो वांट्स मी टू स्पीक। कहते सर आप बच्चों को कुछ बता भी दिया करो। ही इज अ गुड मैन, वेरी गुड मैन। द फेमस बुक स्पेनिश ट्रेजेडी हैज बीन रिटन बाय, बहुत इजी है, बहुत इजी। बताओ, यू टेल मी दिस बुक देन आई हैव अ क्वेश्चन। कम ऑन, स्पेनिश ट्रेजेडी रिटन बाय Thomas Kane, बहुत बढ़िया। My question is, which book is believed to be the preface of Spanish tragedy? Which book is believed to be the preface of Spanish tragedy? किस बुक के लिए कहा जाता है कि प्रीफेस था स्पेनिश ट्रेजेडी का? Focus, very good. Titus Andronicus by Shakespeare. Though sometimes it is attributed to kid only. What are the 5 methods of achieving sublimity? 5 methods कौन से हैं achieving sublimity? Five methods of achieving sublimity. याद करो, 2 नेचुरल होंगे, 3 जो हैं आर्टिफिशियल है, 2 नेचुरल 3 आर्टिफिशियल, टोटल 5। कोमल, पेयर सही नहीं है, ऑप्शन सही है, आंसर सही है, बट पेयर सही नहीं है। Great thoughts, great emotions, first 2. Use of figures, nobility of diction, elevated composition. Great thoughts, great emotions, use of figures, nobility of diction, great composition. These are the 5 parts. Tell me this thing. Who is Jimri in Absalom Achitophel? Who is Korah and who is Shimei?
जिमरी, कोरा एंड शिमाई, कौन कौन है? कम ऑन, हु इज जिमरी, हु इज कोरा, हु इज शिमाई? जिमरी, कोरा एंड शिमाई. नहीं सुष्मिता, मिस्ड इट. जिमरी ड्यूक ऑफ बकिंगम, बहुत बढ़िया. जिमरी इज ड्यूक ऑफ बकिंगम, बहुत बढ़िया. करो करो, शाबाश. कोरा टाइटस ओएट्स, बहुत बढ़िया. शिमाई इज द शेरिफ ऑफ लंदन, जो लंदन का शेरिफ होता है. Name the poet who was passing by, finds a girl singing alone. Song is totally different. He's not able to comprehend, he's not able to understand. He says whether I should listen to the song or I should pass. And then he says that I've passed, but I carried that song in my heart. Which song we are talking about? कौन सा song है? I'm so summing up क्योंकि आवाज बंद हो रही है मेरी. No daffodils, solitary reaper, solitary reaper. Behold her yawn, solitary reaper, highland lass, singing and reaping alone. Okay, now what we do in rapid fire today. Yes, I'll use मुलेठी. पता है बहुत बिजी लाइफ है ना, याद ही नहीं रहता मुलेठी कहानी है, किसको बोलना है, क्या लाना है. अच्छा एक ना, आई मस्ट टेल यू दिस थिंग. Being in the process of same kind of patterns, mind is totally mechanized. So if I'm like, abhi to I have to go to office 9 o'clock, so I will get back for 1-2 hours sleep because I have to stay in my office 9 to 3, and then I have to drive. If I am having sleep in my brain, then I have to drive. It's not safe. Coming back again, evening sessions. So mind is like, okay, we are done with this session, next session is that. When I get time, I'm working on another book. I really wish कि कोविड के बाद वाली सारी चीज़ ठीक हो जाए. I used to get my time to study. मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता था. Now I'm not getting that time to read. Offline batches are being start from 24th of July. Main crowd शायद 10 अगस्त के आसपास आएगा. We'll get involved in offline batches also. 3-3 घंटे की intensive class, extensive level पे जाती है. उसमें बहुत पढ़ के पढ़ाना होता है. You have to read a lot. बिकॉज एक तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स वापस आ जाते हैं ऑफलाइन बैचेस में, ऑनलाइन के ही स्टूडेंट्स ऑफलाइन में आ जाते हैं, तो एक तो वो सब पढ़ के आते हैं पहले से. एंड देन इन ऑफलाइन वी हैव टू टॉक ऑफ द डेप्थ एवरीथिंग, देन एनालिसिस ऑफ एवरीथिंग, रेफरेंसेस, कनेक्शन ऑफ विद कंटेम्प्रेरी लिटरेचर. बहुत हाई लेवल लेक्चर्स देने पड़ते हैं. तो ऑफलाइन इज फन बट इज ऑल्सो इट मेक्स मी रीड फॉर 3 to 4 hours. ऑफलाइन जनरली क्या करता हूँ, 2 घंटे रात को पढ़ लेता हूँ, सुबह ऑफलाइन बैच में जाने से पहले 1-1.5 घंटे पहले रिवीजन कर लेता हूँ कि आज ये डिस्कस होगा. ऑफलाइन के कोई नोट्स फिक्स नहीं होते, कोई प्रिंट्स फिक्स नहीं होते. कुछ बेसिक प्रिंट्स हैं ट्रेडिशनल वो जो देते हैं हम, उसके अलावा नए नोट्स कभी भी बन सकते हैं, कभी भी चेंज हो सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं. इफ देयर इज अ सेमिनार इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आई गेट टू नो इन माई ग्रुप that they are discussing that particular method or topic or new stream, we talk about that thing. तो वो जो लाइफ होती है वो बड़ी हैक्टिक होती है. नाउ वी हैव स्टार्टेड यूपीएससी ऑल्सो, सो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ यूपीएससी कॉल, एंड फॉर यूपीएससी बड़ा पढ़ना पड़ता है. यूपीएससी इज नॉट बेसिक, ओके दिस रीड बुक इज बाय दैट राइटर, दिस इज द टर्म, दिस इज द लाइन. नो, यू हैव टू गाइड देम इन डेप्थ. आज एक वीडियो आएगा मेरा यूपीएससी पे मॉर्निंग में, शायद 10:30-11 के आसपास. बहुत आंसर राइटिंग पैटर्न, गोइंग इन द डेप्थ, वी डील लाइन बाय लाइन पोइट्री प्लस पैराग्राफ्स. तो काफ़ी वो चीज़ है. अब CUET की बुक्स के मेरे पास ऑफर हैं. पियर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स मी टू राइट CUET बुक. ऑक्सफोर्ड बोल रहा है CUCET लिख के दे दो.
इट्स लाइक क्या करूं, बच्चे की जान लोगे क्या। आई वॉज एट होम, इट वॉज रेनिंग, आई गॉट चांस टू गेट ड्रेंच्ड, पानी में खूब नहाया मैं। तो बचपना अब पता नहीं कहाँ चला गया है। बर्डन 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 बर्डन। बचपना अच्छा था। आपको लग रहा है ना आप नेट कर लोगे तो खुशी हो जाएगी, नेट क्वालिफाई करते ही प्रेशर आ जाएगा जॉब का, पीएचडी का, फिर लगे रहोगे। इट्स लाइक घूमते रहो घूमते रहो। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस एंड फाइंड हैप्पीनेस इन सम स्लॉट्स, छोटे छोटे स्लॉट्स। Who is happy at the end? Remember that literary line. Who is happy at the end? No doubt I'm making a good money. ऐसा नहीं कि पैसे नहीं कमाता, अच्छे पैसे मिलते हैं, बट वो करूँ क्या उसका? No friends at all. When you reach to a level, you end up, losing your friends. No friends at all. अच्छा, जो एक आधा बचा है फ्रेंड, वो अपनी लाइफ में बिजी है। कुछ के नंबर गायब हो गए, कुछ ने मुझे कभी कांटेक्ट नहीं किया, कुछ को मैंने कभी कॉल बैक नहीं किया, कुछ को लगता है मैं बड़ा आदमी हूं तो मैं बात ही नहीं करूंगा, और कुछ मुझे मिलते हैं तो जो पहले तू तकार से बात करते हैं वो आप बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे न्यूज़ में प्रमोशंस देख लिया करे, तो न्यूज़ में आता है बंदा। तो चीज़ें धीरे धीरे ना, द मोर यू गेट सक्सेस द मोर योर ग्रुप विल बी, द स्मॉलर योर ग्रुप विल बी, ऐसा कुछ होता है। आई रियली विश आई कुड स्पीक टू ऑल ऑफ यू। कुछ चेहरे देख के बात करता हूँ तो फील होता है कि हाँ ये मेरा समाज, मेरे अपने लोग हैं। और टीचर्स बड़े लकी हैं जिनके बड़े बड़े बैचेस में हजारों बच्चे सामने बैठे होते हैं। कभी न कभी सामने जरूर होंगे, मिलेंगे एक दूसरे से। आप में से बहुत सारे बच्चे मिलने आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। चलो गाइज, कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाऊंगा आज। अभी क्या शांति है ना सब आसपास बहुत, तो दिमाग चल रहा है थोड़ा शांति से। हालांकि नींद मेरी उड़ चुकी है, नींद नहीं आ रही मुझे, बट मुझे पता है कि मुझे 1-1.5 घंटे सोना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइव करना है मुझे। दिल्ली में गाड़ी है ना बहुत सट सट के चलती है बगल बगल से, तो यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस। हम सब मिलेंगे, आप सब हर जगह पे हैं। आई टेल इट टू माई पीपल, इंडिया के हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई मेरा स्टूडेंट जरूर होगा। और ये गर्व की बात है कि पूरे भारत में हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई मेरा स्टूडेंट जरूर मिलेगा, चाहे एक ही हो, पर होगा जरूर। एक पता है क्या हुआ था, मेरा एक स्टूडेंट था दिल्ली पुलिस में, सब इंस्पेक्टर राहुल। अभी उसकी शादी भी हुई है, उसकी वाइफ भी सब इंस्पेक्टर है। तो वो कोविड में किसी को अरेस्ट करके आ रहा था कलकत्ता से, वो और 4-5 कांस्टेबल्स थे, ट्रेन से किसी को लेके आ रहे थे वो। तो ही कॉल्ड मी, ही सेड सर वी आर हंग्री, हमें खाना नहीं मिल रहा है, और ये हमने स्टेशन पे जो भुजिया बिस्किट होते हैं ये खाए हैं, पर इससे काम नहीं चल रहा है, हमें खाना चाहिए, कैन यू अरेंज फूड। एट दैट टाइम स्टेशन पे खाना बंद हो गया था, कोविड में खाना सर्व नहीं हो रहा था। आई सेड तुम कहाँ पहुंचने वाले? ही सेड सर वी विल रीच लखनऊ आफ्टर 1.5 hours। I asked my team, search students from लखनऊ। लखनऊ से स्टूडेंट्स निकाले, 11-12 बच्चे आए। उन 11-12 स्टूडेंट्स को मैंने कॉमन मैसेज भेजा, ऑडियो मैसेज, दैट माई स्टूडेंट विद 4-5 अदर पीपल, क्या आप उनके लिए खाना अरेंज कर सकते हैं? आपके जो भी चार्जेस हैं वो आई विल पे। मैंने कहा आपके कहीं से भी आप खाना कीजिए, जो भी आप पे प्रेशर आएगा मैं वो पे करूँगा, इट्स ऑन मी, पर मेरे बच्चों को खाना पहुँचाइए। 2 स्टूडेंट ने रिस्पॉन्ड किया, उनमें से एक, क्योंकि बाकियों से तो बिजी थे, बाकी अलग अलग जगह पे बिजी थे, उनके बाद में रिस्पॉन्स आए थे। खैर, तो 2 ने रिस्पॉन्ड किया, उनमें से एक रेलवे स्टेशन के पास थी, और वो मेरी स्टूडेंट थी भी नहीं, उसने मुझे सिर्फ कांटेक्ट किया था ज्वाइन करने के लिए। मैंने कहा आप ये करिए, आपकी फीस इसी में से मैं कम करवा दूंगा। शी सेड सर नहीं कोई बात नहीं सर, वो लोग देश की सेवा कर रहे हैं, हमारा फर्ज है। उसने कोई पैसे नहीं लिए मुझसे, कुछ नहीं कम करवाया। उसने खाना पैक करवाया 5-6 लोगों के लिए, अपने हस्बैंड के साथ रेलवे स्टेशन पे जाके उसको, राहुल को और उसके 4-5 जो भी कांस्टेबल्स थे, सबको खाना दिया।
यू नो राहुल व्हाट डिड ही से, ही सेड सर मुझे इतना पता था कि आपके हर जगह पे स्टूडेंट है तो आपका कोई ना कोई कॉन्टैक्ट जरूर निकल आएगा. एंड दैट एक्चुअली वर्कड. एंड सैल्यूट टू दैट लेडी. आई रियली विश मुझे उनका नाम याद होता, मुझे नाम नहीं याद है. लगभग 1.5 साल पुरानी बात हो गई है, 1-1.5 साल. मुझे नाम नहीं याद है, शायद होंगी बैच में, वो देख रही होंगी. बट दैट वॉज टचिंग मोमेंट. मेरे कई सेट सर्टिफिकेट मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने ला के दिए. आई डिडंट गो टू महाराष्ट्र टू गेट माई सेट सर्टिफिकेट, टू कर्नाटका, टू आंध्रा. माई स्टूडेंट्स दे गॉट इट. उनको मैंने अपने डिटेल्स दे दिए. उत्तराखंड सेट जो मेरा दूसरा वाला सर्टिफिकेट है, वो मेरा स्टूडेंट जितेंद्र, वो जाता वहाँ पे, वेट करता, फिर कहता सर ये भेज दीजिए, वो भेज दीजिए, एप्लीकेशन लिखता. बेचारा मेरे लिए उस सर्टिफिकेट ले गया मेरा. तो आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया. आप स्टूडेंट्स मेरी फैमिली हो. चलो अब पढ़ना, सोना नहीं, ठीक है? क्योंकि ज़िंदगी में ना अगर आगे कुछ बढ़ के करना है और ज़िंदगी में अचीवमेंट्स चाहिए तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी. मेहनत करो क्योंकि तुम्हारा हक है और ये तुम्हें छीन के लेना है. ये ला के कोई नहीं गिफ्ट में देगा क्योंकि ले लो. ना कोई नौकरियां है, ना कोई अपॉर्चुनिटी है. लड़ना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा. चार्ल्स डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जिसमें दम होगा वो जिएगा और वो तुम में है. ख्याल रखिएगा. टेक केयर.